Karachi, Pakistan's financial capital, is on edge again. On December 7, a rally marking Sindh Culture Day turned violent, reigniting demands for a separate homeland, Sindhu Desh. Over the day, thousands had gathered across Karachi to celebrate Sindh's heritage, music, culture, and identity. Trouble erupted when the police blocked the main thoroughfare, Sharia Faisal, preventing the rally from moving towards the city's red zone. Officers had asked demonstrators to divert via a different route. When protesters allegedly resisted and began throwing stones at police and patrol vehicles, law enforcement responded with tear gas shelling and baton charges, leading to clashes. 45 people were arrested on the spot. Later, 12 were released on surety, while an FIR was registered, reportedly under terrorism-related charges along with rioting, unlawful assembly, and damage to property. Some groups participating in the rally, described by authorities as nationalist, have reportedly revived calls for a separate homeland for Sindhis. Authorities say the attempt to enter a sensitive zone combined with stone pelting and violent slogans forced their hand. A month ago, Indian Defence Minister Rajnath Singh made a statement on the India-Pakistan border, saying that the Sindh region may return to India. अडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह अडवाणी जी का कोट। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए।